साइंस वन स्पेस मिशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स क्या होता है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होता है, ऑर्बिट्स ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होता है, स्पेस मिशन अवे फ्रॉम द अर्थ। तो अभी ये बहुत सारी बातें हैं आज हम लोग जो आपस में बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। देखो टेलीफोन तक ठीक था, मोबाइल फोन तक ठीक था, मल्टीपल कॉल्स तक ठीक था। आज हम लोग शेयर कर रहे हैं डॉक्यूमेंट, हम लोग स्टडी कर रहे हैं। 100 लोग एक टाइम पे स्टडी कर सकते हैं, 300 लोग एक टाइम पे स्टडी कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात है नहीं, इट्स अ वेरी बिग थिंग, बहुत बड़ी बात है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पेस एंड स्काई बोल रहे हैं वो, स्पेस और स्काई में डिफरेंस क्या है। व्हाट आर द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम में अलग अलग ऑब्जेक्ट क्या है। व्हाट इज मीन बाय अ सैटेलाइट, सैटेलाइट का मीनिंग क्या है। एंड हाउ मेनी नेचुरल सैटेलाइट डज द अर्थ हैव। ये भी तुमको कुछ क्वेश्चंस है जो तुमने पढ़ा है बचपन में इन योर लोअर स्टैंडर्ड्स। ओके, सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी फ्यूचर में, फर्दर में। लेट्स गो अहेड। Man has always been curious about the unknown places, and he has always been eager to explain the horizons of his knowledge by exploring the unknown world. He must have been had been deep curiosity about the space and many twinkling stars in the dark sky. He must have had dreams to fly to the space and must have been working for that. अभी कैसा है ना, ये तुमको इसका मीनिंग समझ में आया है। मैन इज वेरी क्यूरियस। इधर मैन का मतलब सिर्फ आदमी नहीं होता, औरत भी होता है, हाँ, ह्यूमन बींग्स। मैन इज अ कॉमन वर्ड यूज फॉर ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो वी आर क्यूरियस टू स्टडी एवरीथिंग, टू नो थिंग्स, है ना। स्पेस में क्या है, ये क्या है, वो क्या है, वो कैसा होता है, ये कैसा होता है, ये ऐसा कैसा बन गया, देयर आर मेनी थिंग्स। तो ये सब चीजों को स्टडी करने के लिए मैन बहुत ही क्यूरियस है और वो जानने की कोशिश करता है। नाउ अभी दिया है स्पेस मिशंस। सब्सटेंशियल developments in technology, especially space technology, in the later half of 20th century resulted in the development of spacecraft, making space voyage possible. Since then, more than 1,000 artificial satellites have been explored into the orbit around the Earth. ठीक है, क्या बोलना चाहता है। द सेकेंड पार्ट ऑफ द 20th सेंचुरी में क्या होता है, स्पेस टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गया और ऐसा बढ़ा कि अभी स्पेस डिवाइस बन गया है। स्पेस वॉयज मतलब स्पेस में लोग जाके आ सकते हैं, है ना। ऑल दिस थिंग्स आर देयर। सिंस since then more than 1,000 of artificial satellites have been placed in the orbits around the earth. Additionally, space missions have been undertaken for close observation in various objects in our solar system. क्या बोल रहा है, स्पेस मिशंस बहुत सारी चीजों में ऑब्जर्वेशन में सोलर सिस्टम में देखने में काम आते हैं। We will learn about all this in this chapter. We can classify the space missions into two categories. Space mission को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है। In one, the type of mission, the object is to put artificial satellite in the orbits around the Earth for research and various other useful application. ठीक है, रिसर्च के लिए यूज करते हैं। The objective of second mission is to send the spacecraft को भेजने का second mission to find out the close observation and understanding of the object in solar system or even outside the solar system. तो सोलर सिस्टम और आउटसाइड द सोलर सिस्टम में क्या है क्या नहीं है वो देखने के लिए स्पेसक्राफ्ट भेजते हैं। नाउ देखो अभी एक 1 सेकेंड ना। डू यू नो द फर्स्ट पर्सन to go to into the space in a spacecraft was Yuri Gagarin of then the USSR. समझ में आया। यूनाइटेड क्या है, स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया। सबसे पहला स्पेसक्राफ्ट किसने बनाया, यूरी गगारियन गया था, स्पेसक्राफ्ट में गया था, उसका फोटो है 1961। The first person to step in the moon is 1969 में was Neil Armstrong of USA. Rakesh Sharma of India orbited the Earth in 1984 में in a Russia spacecraft. Kalpana Chawla and Sunita Williams of Indian origin also participated in the space exploration through missions organized by NASA.
नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूएसए। ठीक है, सिर्फ साइंस लेने के बाद स्पेस मिशन में जाना भी बहुत अच्छी बात है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। Which types of telescope are orbiting around the earth? Why is it necessary to put them in space? बहुत सारे टेलीस्कोप है ना, स्पेस में रखेंगे तो स्पेस से वो दूर दूर का नजदीक का सब देख के बताएगा ना। फॉर एग्जाम्पल स्पेस में कुछ टेलीस्कोप से तो बताता है विंड्स कैसे आ रहा है, क्लाउड्स कैसे आ रहा है, क्या कंडीशन है। ठीक है, वेयर डज द सिग्नल इन योर सेल फोन कम्स फ्रॉम? कहाँ से सिग्नल जाता है? ठीक है, वेयर डज इट कम टू मोबाइल टावर? अगर मोबाइल टावर जाता है तो मोबाइल टावर में कहाँ से आता है? वेयर डज द सिग्नल ऑफ योर टीवी कम्स फ्रॉम? You may have seen photographs showing the position of monsoon clouds over the country in the newspaper. How are these images obtained? It is through satellite. ठीक है, इसी के बाद ये सब टेक्नोलॉजी संभव हुआ। देखो ना, you can see there is a space satellite spacecraft। देखो यहाँ पे सैटेलाइट है, यहाँ से देखो ये सिग्नल ले भी रहा है और दे भी रहा है, अलग अलग टावर्स को दे रहे सिग्नल। ठीक है, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेस मिशन। स्पेस मिशन की जरूरत क्या है और इम्पोर्टेंस क्या है? द वर्ल्ड हैव कम हैव बिकम अ ग्लोब विलेज ड्यू टू स्पेस मिशन। स्पेस मिशन के लिए पूरी दुनिया एकदम छोटा हो गया, अर्थ ही छोटा हो गया। आपस में कम्युनिकेट करना बहुत आसान हो गया। वी कैन कॉन्टेक्ट अ पर्सन इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विद इन अ सेकेंड। टिक वन बात हो गया। वी कैन गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड वाइड इवेंट सिटिंग एट होम। घर बैठे पूरी दुनिया का खबर ले सकते हैं। We can gather info, हाँ, you all know the importance of internet. Due to internet every information is available at your fingertips। सारे information तुम्हारे उंगलियों में होता है। It has become possible to get advance alert about the natural calamities and take proper precautions। 1 second student। Now during the war during war it is possible to get information from the action of the enemy through the enemy थ्रू एरियल सर्वेलेंस यूजिंग सैटेलाइट्स। तुम लोग मूवी देखो, पूरी अटैक वगैरह, उसमें मालूम है एक पक्षी के जैसा बना है, वो पक्षी के जैसा दिखता है और बराबर वो कैसा करता है, वो पक्षी के जैसा दिखता है, कील जैसा बना है, वो सैटेलाइट रहता है। और जाके इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू एक्सप्लोर द फॉसिल्स रिजर्व्स एंड मिनरल्स इन द अर्थ। इससे मालूम पड़ सकता है फॉसिल्स कितना, मिनरल्स कैसे अर्थ में। Thus, there are unlimited applications of space missions today। Today's space technology is an inevitable part of the development of nation। समझ में आया? Artificial satellite। A natural satellite is an astronomical object orbiting the Earth in any planet। The moon is the only natural satellite on the of the Earth। Earth का natural satellite moon ही है। Some other planets in the solar system have more than one natural satellite। Similarly, if man-made object revolve around the Earth at any planet in a fixed orbit, it is called as artificial satellite। ठीक है, इसको artificial satellite बोलेंगे। The first satellite, Sputnik, ठीक है, was sent to space by Soviet Union in 1957। ठीक है, मतलब वो रशिया ने भेजा था पहला सैटेलाइट। टुडे मोर देन thousands of satellites are orbiting around the Earth। thousands of satellite मतलब इमेजिन कर सकते हो, स्पेस भी पोल्यूट हो चुका है। Today, more than thousands are orbiting around the Earth। The satellite work on solar energy। So, solar photovoltaic cell panels are attached to both the sides of the satellite। Satellite की sides में solar photovoltaic cell डाल देते ताकि वो सनलाइट एनर्जी लेके वो यूज करता रहे और एनर्जी सप्लाई करता रहे। उसको भी तो बहुत भी सेल है ना, उसको भी एनर्जी चाहिए, सनलाइट लेता है। और like a wings instrument are installed in the satellite to receive transmit signals from and to the earth। देखो ये विंग्स की तरह, एक पक्षी की तरह है ना, एक विंग की तरह ये उड़ रहे हैं। साइड में देखो सोलर में उसमें क्या है, बराबर साइड में उसके विंग्स जैसे है फोटोवोल्टेइक सेल।
मुझे तो ऐसा लगता है हम लोगों को सोलर पैनल यूज करना चाहिए, जिसके घर में लाइट अच्छा आता है उसको काफी एनर्जी, मतलब अर्थ का सेविंग हो जाएगा अर्थ का. So solar photovoltaic, okay. The satellites have various other types of instruments depending on their functions. One such satellite is also shown in figure 10.1. The signals transmitted from Earth to the satellite and from satellite to the mobile tower and from mobile phone are also shown. The satellites are sent into the space to perform various functions. Depending on their function, the satellites are classified into following: use of ICT, prepare a PowerPoint presentation showing India's contribution in space research and present in the class. INSAT, Indian National Satellite. GSET, Geosynchronous Satellite. IRNSS, Indian Region of Navigation Satellite System. Indian Remote Sensing Satellite. Geosynchronous Satellite Launched Vehicle. Polar Satellite Launch Vehicle. Okay, understand? फिर आगे देखते हैं ये टेबल. लुक एट दिस टेबल. टाइप्स ऑफ सैटेलाइट दिया है, फंक्शन दिया है और नेम ऑफ द सैटेलाइट दिया है. वेदर सैटेलाइट स्टडी एंड प्रेडिक्शन ऑफ वेदर के लिए रहता है. इनसाट एंड जीएसएटी. लॉन्चर कौन है? जीएसएलवी लॉन्चर है ना. पीछे जीएसएलवी का आई थिंक मीनिंग दिया है ना. जीएसएलवी का देखो दिया है. हाँ, जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. हम इंडियन लोग ज्यादातर ये चीजें बाहर से मंगाते हैं, खरीदते हैं, बट अभी कुछ इंडियन ने बनाना चालू कर दिया. कम्युनिकेशन सैटेलाइट establish communication between different locations in the world through use of specific waves. INSAT and GSAT launcher GSLV. Broadcast satellite, telecasting of television program. INSAT and GSAT launch GSLV. Now navigation satellite, fix the location of any of the Earth's surface in terms of its very precise latitude and longitude. बराबर latitude and longitude के हिसाब से एक precise जगह पे उसको लोकेट कर देते हैं नेविगेशन के लिए, जिससे हम लोगों को नेविगेशन आता है ना, जीपीआरएस वगैरह. मिलिट्री सैटेलाइट कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम सिक्योरिटी एस्पेक्ट. फिर बाद में तुम लोगों ने मिलिट्री के लिए देखो वॉर मूवी दिया था, उसमें दिया था सैटेलाइट के बारे में. फिर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट स्टडी ऑफ फॉरेस्ट, डिजर्ट, ओशंस, पोलर आइस ऑफ द अर्थ सरफेस, exploration and management of natural resources, observation and guidance in case of natural calamities like flood and earthquake. वो IRS है, लॉन्चर PSLV. आई होप तुम लोगों को समझ में आ रहा है लेक्चर, राइट? नाउ वॉच एंड शेयर. ये देखो ये दो लिंक दिया है बाकी लोगों के साथ, तुम इसको वॉच कर सकते हो. ठीक है, ओके, विल गो अहेड. Orbits of artificial satellite. All satellites do not revolve in similar orbits around the Earth. The function of the satellite decides the height of the satellite's orbit of the Earth's surface, the nature of the orbit, circular, elliptical, and whether the orbit shall be parallel to equator or making same angle with it. To put the satellite in its proper orbit at specific height above the Earth's surface, the satellite is also taken to that height using a satellite launcher. Then the satellite is given a specific velocity as the velocity, critical velocity VC, is the tangential direction of the orbit. The satellite starts revolving around the Earth, and the formula of the velocity VC can be derived as below. If the satellite mass m is revolving around the Earth in an orbit, height h with the speed VC, then the chapter on gravitation chapter मैंने कराया नहीं है. एक सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू वी एम बी सी स्क्वायर, एम बी स्क्वायर अपॉन आर होता है. ठीक है, तो क्या होगा? एम बी सी स्क्वायर अपॉन आर, क्योंकि सी इज द, क्या बोल रहे हैं, वीसी स्पीड दिया है ना इधर. ठीक है, हियर आर इज द ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ.